Good evening, Tanupya. इंसान गुड इवनिंग जाना भाई सोनू उदिता good evening. So, how many of you completed? I'm good, Vivo. How many of you completed your first 5 lectures as it was your task? किसी का हुआ खत्म? रिंकी का हुआ, हरजोत का हुआ. Byung is first class, so I'm not audible to you. चलो. So, how is it? कैसा लग रहा है ज्योग्राफी पढ़ के? हम्म. मजा आ गया है. And that's what I want to hear. That should be the feeling. That should be the uh, expression. यदि कुछ अच्छा लगे तो you guys should send me some WhatsApp messages ना that keep me motivated कि हाँ सर अच्छा लगा आज. I think Veerbhadra sent me some message with a question, so we will be taking his question in the class. And I think Tanupriya has a question in the previous session, so we have not discussed that. Tanu, was it clear? Have I discussed that question in the later classes? And ज्योति सिंह सब कुछ मिक्स हो गया है. क्या मिक्स हो गया है ज्योति? What like there's just one subject that you have to read and that's also very basic. So क्या मिक्स हो गया है? चलो. So we will start with I think both Tanu and Veerbhadra has the same question. Uh, Veer, if you wanna ask, you can. Sapna, good evening, very good evening. Or you can unmute yourself and ask your question. Hello, sir. Hello, sir. I am audible. Yes, you are. Sir, my question is, if you travel from east to west, whether from today we are traveling from India to west. Today date is pi. Whether in the same date is in the west or it will be changing. Whether it is one day before or one day after from the east. So let us understand this in a very clear manner. Let's suppose this is your Earth, or this is our Earth, rather. And this is international date line. What is it? International date line, 180 degrees. If this is 180 degree, then this point is your 0 degree Greenwich Mean Time, and this is also 0 degree. Ultimately, this imagine this. This is the sphere, and which we have flattened that. Okay, this is the sphere that we have flattened. I think all of you are able to imagine. Use your imagination. So once you have flattened this, then this is also Greenwich Mean Time, 0 degrees. Now let's draw a few more lines here. So from here to here, let's take this as
90 degrees. This will be 90-degree east, and let's draw another line somewhere here in middle. This will be 90-degree west. All of you are able to understand this. This is east and west as well. All of you are able to understand this diagram, what I am doing here, just this much. ये क्या मैंने किया है, ये सबको समझ में आया है? Neha Paya, what about others? Just tell me yes or no, then I will move forward. Otherwise, I'm not in hurry. So if you're not getting it, just tell me and I will try to explain it better. Good. Good. So this is our earth. This is our spherical earth. And उसको हमने ऐसा for our sake of like understanding, we have flattened that. Let's suppose you have like your you have the globe printed on a paper and then you cut that and flatten it, सीधा बना दिया उसको, तो ऐसा कुछ अपने को अर्थ दिखेगा. This is the international date line. International date line. Let's see it how it looks on the actual globe. Let's open Google Maps. Where we are here. So this is where I am. This is our Earth. Now, see, this is international date line. ये दिख रहा है तुम्हें ऐसा zigzag सा line? This is international date line. This is not a fixed straight line. This is a zigzag line. That means if you cross this line from this side to this side, date will change. If you will cross from this side to this line, date will change. How and why? I will be discussing that in detail. For the sake of our understanding, for now, just try to think that this is a straight line here. 180 degree straight line. ठीक है, ये क्यों zigzag है? I will be explaining you that as well. Now, coming back to our triangle. देखो, और यहीं पे एक बार समझने की कोशिश. From here, let's suppose the sun first rises here. सूरज उगता है सबसे पहले. Sun will be shining here. This is your sun, let's suppose. And अरे यार ये उल्टा हो गया. So from this side, sun is coming. Now, as the earth will move, it will take the earth to rotate 12 hours to come to this point, right? It will take 12 hours to come from 180 degree to 0 degree. 180 degree travel करना है. 360 करने में it takes 24 hours. So 12 degree travel, 180 degree travel करने में it will take 12 hours. I think that's very simple to all of you. Santosh, this class is not for you.
You are in the wrong class. You text me. You text me now on my WhatsApp number, and I will guide you what you have to watch, what you have to do, where you have to go. And if you will not do that, I will consider that you are a very idiotic person who is disturbing the flow of the class. So it will take 12 hours from there to here. Again, it will take 12 hour more to come from there to here. So पूरा एक 24 hours लगता है वहां से यहाँ आने में. अब वापस से यहाँ आते हैं. So let's suppose this is 1st January. 1st January at this point. 1st January. 1st January. So sun will start traveling in this direction, or earth will be rotating, but it will feel like the sun is rotating. So sun will start traveling in this direction, and after 12 hours. So as it will be traveling, every hour there will be, like after every, there will be new year here, then there will be new year here, new year here, as I have explained probably in the class as well. तो तुम लोगों ने वो देखा होगा. अभी जब यहाँ 1st January है, तो टेल मी कि व्हाट विल बी द टाइम and date here on the just opposite side of this line. What will be date is 31st and time? What will be the time? नहीं, देखो यहाँ पे लेट्स सपोज इट्स 1st January 00 0000 हो गया एकदम 1. So people have like this is the clock and people have started calling their friends happy new year here on this point. At the same exact point here, they will also have their 00 hours, but it will be 24 hours back, exactly 24 hours back, because it will take sun to go 12 hours here and then again cover 12 hours more here. So it will be exactly 24 hours back. The time will be same 00, but the difference will be of 24 hours. So 00 of 31st. So these people have just entered into 31st. उनका अभी खत्म हुआ है 30 और वो 31st में अब जस्ट एंटर किए हैं. एंड आफ्टर कंप्लीट 24 hours they will celebrate their new year. समझ में आई बात? After exact 24 hours they will celebrate their new year, because for them the sun will come after 24 hours. ठीक है. So if, as I have probably told you in the class as well, you can celebrate new year twice. If you are a person who is at this point of time, let's suppose you are in Japan, so you can celebrate your new year and you can again go back to Alaska and you can celebrate new year there as well, because the time difference is about 20 hours. ठीक है. So again, now coming to Veerbhadra question. Okay, I am in India. So let's suppose I am, देखो date change तभी होगा when you are crossing this date line. Otherwise, no matter how far you go from here to all this place, the date will be same. जैसे कि let's suppose we are in India. तो 90 डिग्री के आसपास हम हैं, मान लो यहाँ पे हैं 82 degrees and something. So we are here in India.
And Veerbhadra, your question was in which direction we have to move? Repeat it once. या text में लिख दो. In which direction we want to move? East to west. Okay. So we are here, and as per your question, we want to move towards USA. है ना, हम इंडिया में हैं और हम यूएसए की तरफ जाना चाहते हैं, या हम पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, हम यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, अफ्रीका की तरफ जाना चाहते हैं. दैट इज वेस्ट फॉर अस. नाउ सो क्या एक बार फिर से अनम्यूट योरसेल्फ, लेट मी अनम्यूट यू. हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन अगेन. Sir, am I audible, sir? Yes. Sir, today we are traveling from India to USA or any Western countries. Today date is 5 in India. 5. Okay. Okay. What is the date in Western countries today? That's very simple. If then you, why are you adding कि we are traveling? तो मैं मान लो कि हम इंडिया में बैठे हैं and we want to know कि what will be the date in other countries. So that's very simple. I think we have done many questions around that. तुम ही लोग बताओगे. I think ये डाउट तो नहीं होना चाहिए था वीरभद्र. If you are having this doubt, that means you have probably not understood the concept. Anyway, so let's do some maths that we have done in the classes again. Let's suppose this is what time it is. Let's 8 a.m., 8 p.m. in our country. We are at, if it is 8 p.m. at 90 degree east, what will be the time at Greenwich Mean Time? यहाँ पे क्या हो रहा होगा अभी? Nothing, Tanupriya, no difference. That's why we do not call it 180 degree east or west. इसलिए we call it as one single name, international date line. We will not find 180 degree east or west written anywhere. The line merges into one international date line. जैसे 0 degree east और west नहीं देखते. So Neha is saying 2. Sudeep is saying 2:30. Yes. 90 degree से जाएंगे. So Sudeep गलती कर रहे हैं. I'm not saying India. I'm saying if we are traveling from 90 degrees, I'm repeating the question again. If we are traveling from 90 degree east to 0 degree to UK, what will be the time? Not traveling again. If it is 8 p.m. in India, forget about the travel. If it is 8 p.m. in India, what will be the time in UK? Oh, framing the question in the wrong way. दो क्वेश्चन मिक्स कर दे रहा हूं मैं. First question is, if it is 8 p.m. at 90 degree east, 8 p.m. at 90 degree east, what will be the time in Greenwich Mean Time? Two p.m. क्यों 2 p.m. होगा? The calculation is very simple. Every 15 degree is 1 hour. So here we have difference of 90 degree. 90 by 15. कितने घंटे का हो गया? 6 hours. So if it is 8 p.m. here, the UK is 6 hours behind us, or 600 ahead, 600 behind us. So 6 hours behind us. तो वहां पे क्या टाइम हो रहा है? You subtract 6 from 8, you will get 2 p.m. The date will be same. वहां भी वही डेट हो रहा है. They are also in 5th of August. If we will keep moving in this way till the 24 degree quite opposite to this, let's start increasing the time. अब बताओ 90 degree west में क्या हो रहा होगा? If the time at 90 degree east is 8 p.m. Here the question again. If
the time at 90° east is equal to 8, what will be the time at 90° west? यहां पे क्या टाइम हो रहा होगा? 8 AM and date? Date 2 क्यों आ रहा है? Many of you are saying 2. How it will become 2? It will be 6 hours here and 6 more hour here. तो 6 12 घंटे हो गया. And it will be 8 AM. And since we are not crossing the date line, so there will be no change in the date. It's just 12 hours back. You imagine your clock on the wall. We are here. And if we rotate it back 12 hours, it will be the same day, but 12 hours back. So it's the same day, 8 AM, same day. The time is how much? Sorry, time is 8 AM and date is 5th of August. Now, what will be the time at 0°? Sorry, what will be the time at international date line? 180° ईस्ट या वेस्ट पे क्या टाइम होगा? टू PM कैसे हो जाएगा सुजाता? Two AM. What we will do? You just look at this clock. 8 बजे है. You will go 6 hour back more. So you will come to 2 AM. So here the time is 2 AM. And the date is 2 AM. Date is 5th of August still. Now let's move a little bit more. And let's suppose we come here. I'm giving you a new line. This will be 120° east. What will be the time at 120° east? What will be the time on this line? Now, this is the trickier one. If you will get this one right, you will get everything right. Suchita, you are constantly getting it wrong. Watch the videos again. How many hours you have to go back? कितना degree है ये? From 180 to 20. So this is 60 degrees. 60 degrees means divided by 15 is equal to 4 hours. So if we are at 2 AM and if we will go back 4 hours, it will be 10 PM. 2 बजे पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 10 PM. But here you are crossing this 12 AM wala line. You are crossing the date line. And as soon as you cross the date line, the date will change. Now, here you will have 10 PM of
विच स्टेट? नहीं, गड़बड़ हो रहा है। सुनिए, प्लीज आस्क अदर क्वेश्चन। ठीक है, पूछते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखो, हम यहाँ 8 PM हमारे यहाँ हो रहा था, 5 अगस्त का। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। अंजलि बताओ। देखो, अगर नॉर्मली देखें, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, when it is 8 PM here, when it is 8 PM at 90° east, what will be the time at this place? नॉर्मली भूल जाओ, हम अगर ऐसे घूम कर नहीं जा रहे हैं, अगर हम ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में देख रहे हैं, forget about everything. Like, let me draw this again. Do this question. If time at 90° east is equal to 8 PM, what will be the time at 120° west? PM of 5th August, ये बहुत ही सिंपल है, because the difference is of how many hours? 90 से 120° के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 का। तो द डिफरेंस विल बी ऑफ 2 hours, सो इट विल बी 10 PM। अभी हम टाइम देख लेते हैं। देखो, मैं तुम्हें शायद मैंने को वहां पे वर्ल्ड मैप दिखाया भी होगा, वर्ल्ड टाइम क्लॉक। देखो, लेट्स ट्राई टू सी द मैप। See, what country lies on about 120°? 120° के आसपास ये वाला कोई लाइन होगा, आई थिंक। लेट्स सपोज फिलीपींस और इंडोनेशिया। सो लेट्स चेक टाइम देयर। इन इंडिया, इंडिया 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 इंडिया, न्यू दिल्ली सर्च करते हैं ना, रशिया, कनाडा, इंडिया, वेयर इज इंडिया? Yes, here we are. So in India, we have this time 8. India, New Delhi, time is 8. अभी देखते हैं कि फिलीपींस में कितना बज रहा होगा, है ना? See the time in Philippines. Philippines. पाकिस्तान, फिलीपींस। देखो वहां क्या हो रहा है, 10:30 हो रहा है। द डेट इज सेम, फ्राइडे। द डेट हैज नॉट चेंज्ड। डेट कहाँ चेंज हुआ है? पापुआ न्यू गिनी में चेंज हो गया है डेट। ठीक है, डेट और कहाँ कहाँ चेंज हुआ? देखो, सैटरडे कहाँ कहाँ हो चुका है इन सारी कंट्रीज में। ऑस्ट्रेलिया में सैटरडे हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में दिस ऑलरेडी सैटरडे, बिकॉज वहां पे नया दिन स्टार्ट हो चुका है, बट नॉट हियर। सो द कैलकुलेशन दैट वी आर गेटिंग हियर इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे जो तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो ऐसे डेट क्रॉस करके, दैट कैलकुलेशन इज wrong, because
they have not started their new date again. यहाँ पे सूरज अभी आएगा 2 घंटे के बाद, अभी नया सूरज आया नहीं है. Sun has come up till Australia. हाँ, हो गया और हुआ नहीं है, मतलब हो जाएगा. लाइक सन इन दैट सेंस इट हैज क्रॉस द 12 का बैरियर. तो जो 12 का बैरियर क्रॉस कर चुका है, देयर देयर विल बी डेट चेंज. ठीक है. सो दिस आई थिंक इज अ वेरी गुड मैप इफ यू वांट टू सी कि किस कंट्री में डेट चेंज हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है. यू कैन प्लॉट दिस एंड चेक देयर लोकेशन एंड देन गेट योर आंसर. सी कितना तुम सही हो, कितना तुम गलत हो. यू कैन डायरेक्टली check the answers from this world map, world clock. ठीक है, और बताओ, ये क्लियर हुआ? हाँ शुभम बताओ. वेट, लेट मी अनम्यूट यू. यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ. Hello, sir. Sir, I have participate lectures. I have come from office. Can you please change the time? Your voice is not audible. Okay. I Hello, think sir. Sir. you are saying it's your office, you're not able to attend the live classes. Okay. Okay. Text me. There's a lot of noise from your side. Text me. Okay. Okay. So where I was. हाँ, now zigzag. इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा. हमने देख लिया 10 होगा. यू जस्ट गो फ्रॉम हियर टू हियर, यू सब्सट्रैक्ट 2 hours. यू डू नॉट हैव टू लाइक क्रॉस फ्रॉम हियर टू देयर. हाँ, बट इफ somebody is coming by traveling all this, that person will gain a day. अगर कोई इतना ट्रेवल करके आता है इधर से, for him there will be a change in the date. Otherwise, it will not. Let's. Subham, I think the day, I have already explained about this, about the change of the time of the classes. If you're not able to watch the live class, I am already posting the recordings of the live classes. तो वो कर सकते हैं. देखो अब इसमें डेट लाइन का क्या है. We have discussed this कि एवरी कंट्री सेट इट्स ओन टाइम. जैसे इंडिया ने अपना टाइम डिसाइड कर लिया है कि हमारा 82.5 डिग्री होगा, ऐसे ही एवरी कंट्री हैज अ राइट टू डिसाइड कि व्हाट शुड बी देयर टाइम. तो सम ऑफ दीज कंट्रीज, जैसे कि हियर यू हैव कंट्रीज लाइक हवाई एंड ऑल विच फेवर्स यूएसए. तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को यूएसए के टाइम के साथ अलाइन रखना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि अगर यूएसए में इट इज फर्स्ट तो यहां भी फर्स्ट हो. इफ इन यूएसए इट्स 2 तो यहां भी 2 हो, सो दैट दे कैन वर्क एज पर द कैलेंडर ऑफ यूएसए. So that's why you will see कि some countries have adopted USA time. Some countries in this region, they feel themselves much more closer to the Australia. So they want to follow the Australian time even if they are on the other side of the globe. तो ये इस टाइम को फॉलो करते हैं. So this line is as per that. जो भी कंट्री है वो अपना डिसाइड करते हैं कि वो किधर रहना चाहती है. एंड दैट्स व्हाई वी सी अ माइन्यूट डिफरेंसेस, माइन्यूट फ्लक्चुएशंस इन दिस रीजन. यू विल फाइंड स्मॉल आइलैंड्स इन दिस रीजन. यहाँ पे देखोगे, इफ वी जूम इन, वी विल फाइंड स्मॉल आइलैंड्स हियर. देखो ये किरिबाती है. सो अभी किरिबाती वाज इन न्यूज. So these countries follow the Australian time. On the other hand, if you will come here, you will find some islands here, like these islands. These islands are following Fox Islands. These islands are following
Australian time, and that's why the line has been bent in that away from the 0 degree. Messi is saying कि डेट लाइन लैंड में से क्यों जाता है? इट्स वेरी सिंपल आई थिंक. सॉरी, डेट लाइन वाटर से क्यों जाता है? इट गोज फ्रॉम द वाटर बिकॉज अर्थ इज लाइक दैट. अगर यहाँ पे कॉन्टिनेंट आ जाए तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज आवर 0 degree इज हियर. सो 180 degree विल बी अपोजिट टू दिस एंड दैट्स व्हाई इट इज हियर. अगर 0 degree यहाँ नहीं होता, इफ इंडिया वुड हैव बीन डिस्कवरिंग दिस, तो opposite to India, it should have been passing from the USA. So 90 degree west is 4 p.m. and 105 degree east. I could not get your question, Anjali. चलो, if at 90 degree west you are saying it's 4 p.m. मान लो 90 degree west पे 4 p.m. है. Everybody do this. 90 degree west पे मान लेते 4 p.m. है. चलो, let's remove all this. 90 degree west पे 4 p.m. है. So what's your question? What will be the what will be the time at? कहाँ गया? 105 degree east. So we have 105 degree east here. 120 और इसके बीच में 105 degree east here. ठीक है. So देखो, इसको इस तरीके से सोचना पड़ेगा फर्स्ट कि यहाँ पे अगर 4 p.m. हो गया है, यहाँ पे अगर 4 p.m. हो गया है, दैट मीन्स कि एनी पोजीशन विच इज इन द ईस्ट, वो क्या होगा? इट मस्ट ऑलरेडी हैव सीन 4 p.m. वहां पे पहले ही 4 p.m. हो चुका होगा, है ना? अगर वेस्ट में सन जाके वेस्ट में शाम का 4 बज रहा है, तो यहाँ पे बहुत पहले ही 4 बज चुका होगा. दिस आइडिया इज क्लियर? ये पहले तुम लोगों को आइडिया क्लियर हुआ कि यहाँ पे पहले 4 बज चुका होगा. दिस टाइम विल बी अहेड. तो यहाँ पे 4 बज चुका होगा, मतलब यहाँ पे जो भी टाइम आएगा वो 4 के बाद का ही कुछ टाइम आना चाहिए, 4 p.m. के से डिलेड टाइम. अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे 105 से कितना डिग्री हम ट्रेवल कर रहे हैं. तो हम यहां से ट्रेवल करेंगे पहले कितने डिग्रीज? 105 से 0 डालने में 105 डिग्रीज यहां ट्रेवल करेंगे, और फिर यहां से फर्दर वी विल बी ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस, दैट इज 90 डिग्री. तो ओवरऑल वी आर ट्रेवलिंग 195 degrees. We are not traveling this distance. We are traveling from here to, or we are not traveling, or sun is traveling. Sun is traveling from this distance to this distance. So how much time it will take sun to go there? हमेशा ना, one of the best way to look at such questions is to imagine yourself as sun. कि तुम सूरज हो, because the time is decided by the sun. तो तुम सूरज हो, तुम यहाँ पे हो, और तुम्हें यहाँ तक जाने में कितना घंटा लगेगा ये डिसाइड करो. तो तुम अगर यहाँ हो, if you are at 90 degree east, what, how much time it will take you as a sun to travel to this region? Sun cannot travel backward. वो ये नहीं बोला कि चलो आज दूसरे रिवर्स गियर में चलते हैं. Sun will travel forward.
from east to west. So 195 degrees divided by 15. What we will get? 45. So 13 hours. ठीक है? 13 hours. Now it is 4 p.m. So exactly opposite to 90 degree west. 90 degree east में कितना टाइम होगा? 4 a.m. यहाँ पे 4 a.m. होगा. And this 4 a.m. will be of which date? This 4 a.m. will be of which date? Same date or next date? अगर मान लो यहाँ पे 5 है, क्या टाइम लिया था हमने? 4 लिया था ना. 4 p.m. ऑफ 5th अगस्त है यहाँ पे मान लो. तो यहाँ पे अगर 4 a.m. होता है, दिस 4 a.m. विल बी ऑफ विच डेट? सेम नहीं होगा, नेक्स्ट होगा ना, क्योंकि ये देखो ये यहाँ तो 5 बजे का 4 बजे का सुबह बहुत पहले हो चुका है. दोबारा से 5 थोड़ा ही बजेगा यहाँ पे. यहाँ 5 बज गया था तब तो यहाँ 5 बजा है सुबह का. नहीं तो अगर यही सूरज नहीं आया हुआ था होता 5 तारीख को तो यहाँ भी नहीं आता. सन हैज ऑलरेडी रिजन वंस ऑन 5th of August. तो दूसरा वाला जो डेट होगा वो 6 का होगा. तो यहाँ पे 4 a.m. 6 अगस्त हो रहा होगा. और ये जो टाइम होगा देन इट इज 1 hour अहेड. तो यहाँ पे हो रहा होगा 5 a.m. ऑफ नेक्स्ट डेट 6 अगस्त. ठीक है, समझ में आया अभी? तो जो गुड क्वेश्चन. सो ऑलवेज फॉलो सन. सूरज कितना ट्रेवल कर रहा है और फिर क्या टाइम हो सकता है. डू सम मोर क्वेश्चंस अराउंड दिस. एक टाइम कन्वर्टर भी आता है, वर्ल्ड टाइम कन्वर्टर तो करके देखते हैं. देखो तो यहाँ पे तुम चाहो तो कोई सा भी टाइम डाल लो और उसके अगेंस्ट में यू कैन सी द अपोजिट टाइम्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. तो यहाँ पे तुम अपना टाइम जोन वगैरह चाहो तो देख सकते हो. चलो, और कोई डाउट? शुभम, टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है. इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट टेलीग्राम ग्रुप देन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप. आई एम पोस्टिंग द लिंक्स देयर इन दिस डेली न्यूज़पेपर बैच. जो बैच 11 से है शायद उनको नहीं मिल रहा होगा, बट अदर्स ऑल आर गेटिंग और यू आर इन दैट ग्रुप. इफ यू आर नॉट इन दैट ग्रुप देन यू आस्क मी, आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप. जैसे पिछला जो लेक्चर हुआ था, आई हैव सेंड द लिंक ऑफ दैट ग्रुप. देखो ये मैंने ज्योग्राफी Q&A सेशन करके यहाँ पे भेज दिया है. आज का भी मैं डाल दूंगा. चलो ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन. विल मीट अगेन नाउ ऑन Sunday. Santosh, I told you that leave the class. I don't know why you are still in this class. I told you if you will be in this class, you will be idiot. If you will not. हे भगवान, क्यों ऐसा इडियोटिक काम करते हो? I told you to text me. I will explain it there. क्यों सिंपल इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ में आते हैं? इफ देखो पूरी ब्यूरोक्रेसी क्या है? when you become a part of the system, all you have to do is to give orders and follow orders. If you cannot understand the simple communication that leave the class, this class is not for you, and text me immediately,
टेक्स्ट कर दिया तुमने मुझे व्हाट्सएप पे? मुझे तो I can't see any message. So if you are not able to follow the simple instruction, तो क्या करोगे फिर? चलो, let's end it here. We'll meet again on Sunday at the same time, 7:30. Bye.